Okay, so mood board. Let's talk about it. Let's talk about a few websites before getting right into finding the references. Okay, so मैं देख रहा था last video मेरा cursor नहीं आ रहा था, so the part which I was mentioning about कि अगर उस पे काम नहीं किया तो वो shed लगेगा, and that is this part, the mood board. Okay, hopefully it is appearing in the. This is a good feature. Anyway, so let's get into it. So अगर मैं अपना एक new tab खोलूँ तो you will see a lot of bookmarks here. Okay, so I will just select a few. Okay, and I will show you guys कि भाई कहाँ से आप inspiration ले सकते हैं and what kind of websites can help you guys to find the right references. Okay, so this is Billy. ये जिस तरह से YouTube चैनल है इसी तरह से आप इसी तरह ये एक चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है. यहाँ पर बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, बट this is mostly for the tutorials and everything. Let's just talk about something else. So this is art of the titles. So ये वो जगह है जहाँ पर जितने भी अभी तक titles बन चुके हैं, the majority of them are here. Okay, so you can just play any of them and get inspiration from, and if you think ये वाला अच्छा है तो you can just take things out and search them and study okay भाई किस तरह से क्या चीज़ बनी हुई है, and just get inspiration right away. Okay, so let's just play any one of them just to make the point a bit clear. See, खूबसूरत style frames, खूबसूरत. So you can study these things, and after you study these style frames, then you will be able to produce things like that. Okay. So हमारे केस में हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा वो होगा मोबाइल फ़ोन पर. However, that is not really important. I mean, if I think this can be a good color palette. This can be a good color palette. But ये थोड़ा सा horrifying लग रहा है, मतलब थोड़ा सा Halloween sort of लग रहा है, या post a couple what's the term, post apocalypse post yeah, lipstick, yeah, that's the right word. Okay, so ये नहीं, इसके अलावा एक और वेबसाइट है. आई विल जस्ट राइट अवे शो यू गाइज ऑल द वेबसाइट्स. ओके, और फिर उसके बाद आई विल शो यू गाइज किस तरह से रेफरेंसेस कलेक्ट करनी है, एंड और फिर क्या अपना आगे प्रोसेस. ओके, सो स्टार्ट बुक मार्किंग ऑल दीज थिंग्स. आर्ट ऑफ द टाइटल्स इसका नाम है. नेक्स्ट है बिहास. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड नो अबाउट इट. Okay, so Behance है. उसके बाद है Film Grab. Film Grab is about finding the right color palette and cinematography references majority. Okay, यहाँ पर आपको तमाम मूवीज़ के या majority of movies के वो मिलेंगे screenshots. Okay, you can browse even by category and everything. So these again, I cannot stress this enough. The mood board part is way more important than you think it is. Okay. So if you have done your job right, this could work really well in the final output. Okay. So for example, if I look at this one, yeah, I am seeing a talent in the middle of the sentence, in the middle of the frame composition. But मैं इसका background भी देख रहा हूँ. The background is sort of looks like a mystery or suspense, and it's tense. Okay, so maybe we can get inspiration from this. Who knows? Maybe if I look at this frame and if I think about the mobile phone, so what I can do is put the text. ये जो पीछे red lines आ रही हैं, I can put the text इस तरह background में, and put the mobile phone in front of it. So things like that can happen once you start combining things up and getting the right inspiration and turning things around. So this is then also a website for that. The Behance. Okay, look at this. This is beautiful. This is beautiful. Okay, so yeah. Okay, so once I show you all of the websites, after that I will start working on finding the right references. Okay, the Film Grab ho gaya, Behance ho gaya. Okay, next is where is it?
पक टीवी है? Okay, this is amazing. This is an motion graphics brand. Okay, it's a creative company, just like as it is, just like it is mentioned here. So they have worked on amazing projects like Love Death Robots and etc. I mean, इनका portfolio लाजवाब है, Microsoft वगैरह वगैरह. So you can get a lot of inspiration from these sort of people. ये हो गया man versus machine. So you know, start to listen, start to see a lot of their work. Okay, once you start absorbing these sort of references and these sort of styles, you will have the motivation and you will have the right ideas and vocabulary in your mind to work like them. Okay, see, simple, amazing. Okay, the typography and everything. ये हो गया design.studio है. Okay, so you guys all should bookmark these things. Design.studio. Amazing brand, amazing brand. Lovely. I mean, the 2D and the design team they have is truly amazing. It's truly amazing. You see, we can even try to do something like that. Okay. So yeah, keep researching, keep researching. Expand your references. Expand the platforms where you find your references. Buck, Film Grab, Behance. Okay, and what is it? Behance. Yes. जिस तरह add art of style frames, जिस तरह art of titles है, उसी तरह art of style frames भी है. And I love this website, by the way. थोड़ा सा मुश्किल है इसमें navigate करना, but once you get the hang of it is kind of better. But the UI is great anyway. Art of style frames. Yeah. See, so basically यहाँ पर हर तरह के आर्टिस्ट हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, and once you click on any artist, you can find their work and their style frames. See, for example, let's just click on this. Okay, so इसमें कहीं भी आपको वीडियो नहीं मिलेगी. These are just the style frames. Okay, so again, you need to find the right references. You need to find the right people to get inspired from. Otherwise, अगर आपका reference ही सही नहीं है, अगर आपकी inspiration ही मज़ेदार नहीं है, then the final output will not look great. Okay, so मुझे ये बड़ा अच्छा लगा in terms of reflection, honestly. So let's just start grabbing some of the references. Okay, so basically मैं बता देता हूँ. मैं use करता हूँ pure reference. This is just software utility. What do you see? Let me just show you. ये बस छोटा सा एक बॉक्स आपके पास खुल जाता है and there is nothing here. Okay, so यहाँ पर कुछ भी नहीं है. Let me just show you the website where you can download it. It's free, but you can donate things up if donate some money if you want. Your reference. Okay, so यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ. मैं this is very lovely. There's nothing in the application itself. There's nothing in the user interface. You just have to copy and paste stuff. That's all. Okay, you can just download things up from here. इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. Just try it out. Okay, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ. अब for example, let me just control minus it because मेरा कैमरा इसके ऊपर आ रहा है. Okay. अरे यार चला गया क्या? बच. I really like the reflection, so maybe we can use these reflections in our phone. इस तरह के, not 100%, but just to get the right inspiration. Okay, so here's pure reference. So यहाँ पर मैं copy paste कर सकता हूँ. That's it. Okay. So again, दोबारा आ जाते हैं.
Okay, so second वाले भी कॉपी कर लेते हैं. So अच्छा, by the way मैं यूज़ कर रहा हूँ Shift, Windows और R इस स्क्रीनशॉट के लिए. And then I just copy and paste it. आप इस तरह भी कर सकते हैं. If this is not working out for you, maybe you can just take the screenshot like this, snipping tool से. It's all up to you. Okay. Word आपके पास और भी options हैं. Snagit वगैरह भी applications हैं. Let me just snag it. You can download this as well. ये भी बड़ी मजे की application है. Okay. Okay, so let me just copy and paste. Okay, so then आगे. ओके सो ये तो हो गया हमारे पास जो रेफरेंसेस कलेक्ट करने की जगह है. ठीक है. Pinterest, एब्सोल्युटली. Pinterest इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. ओके सो मैं दिखा भी देता हूँ. मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि तमाम चीज़ें का एक बोर्ड बना लूँ. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम वर्किंग ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट, आई क्रिएट अ Pinterest board of it and start collecting things up. Okay. So मैंने मोबाइल ऐड के लिए ऑलरेडी एक बोर्ड बना लिया था. हाउ यू कैन क्रिएट अ बोर्ड आई विल शो यू. मैं बता देता हूँ. सो फॉर एग्जांपल लेट्स सर्च फॉर स्मार्ट फोन डिज़ाइंस. ओके सो लेट्स जस्ट से कि ये आया हमारे पास एंड देन वी कैन जस्ट यहाँ पर आकर आप क्रिएट बोर्ड करें एंड यू कैन जस्ट टाइप इट आउट कि भैया अगर आपने स्मार्टफोन बोर्ड बनाना है. ओके. Anyway, so I think processor के लिए ये सही रहेगा, but I will have to find a different method as well. But let's just add it. Let's just add it. Okay. Anyway, let's just add it anyway. Mobile. I think ideally मुझे smartphone कहना चाहिए इसे. Maybe not. Okay, so but मैं इस तमाम चीज़ों को normally Pinterest पे collect करता रहता हूँ because I'm not always working on desktop PC. मैं फ़ोन में भी कभी कभार references collect कर रहा होता हूँ, so मैं normally Pinterest पर बोर्ड बना लेता हूँ. And when I start to compile things up और हर जगह से references compile कर रहा होता हूँ, so I usually compile things up in the pure reference. Okay. So ये हो गया. Now let's just start working on finding right references. Maybe this is a really nice reference. Okay. इस तरह से हम अपने फ़ोन को भी रोटेट कर सकते हैं and create something cool looking output out of it के भाई हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारे कलर्स हैं डिज़ाइन. so let's just say add mobile ad और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले ही लेते हैं साथ साथ. okay. मेरी तस्वीर भी आ जाएगी इसमें. डिवाइस कर लेते. ठीक है. कभी कभार रेफरेंसेस लेने के लिए मैं अगर क्लीन स्क्रीनशॉट चाहिए होता है तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस Vimeo लिंक क्योंकि Vimeo पर ये बार नहीं आ रहा है वो. ठीक कि मैं खूबसूरत बना रहा हूँ. So it's not absolutely necessary to use phone in each and every composition. ठीक है. कहीं पर हम कुछ इस तरह के elements भी लगा सकते हैं. But at the moment, let's just keep things simple. कहाँ गया ये प्रेम था? Here. Best, so let's just copy it. तो इस तरह से हम रेफरेंसेस कलेक्ट करना शुरू कर देंगे. सो मैं भी एक दो मैं रेफरेंसेस और खुद से कलेक्ट करूँगा आपके सामने आपके साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में. And then I will just stop the screen recording and find the right references.
Okay, क्योंकि ये काम ऐसा है कि आपने बस करते रहना है, and definitely you will end up finding the right reference for your phone. Maybe this will work. इस स्क्रीन इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, आई मीन इस कॉम्पोजिशन को हम यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन साइज डिफाइन करने के लिए, मे बी, because we can put a video game in the uh, inside the screen, on the screen. Okay. और यस, एक मैंने जो बनाया था, ये मुझे बहुत खूबसूरत लाइटिंग लगी है, हमें दिस इज़ रियली अमेजिंग। ये जो है बहुत ज़्यादा, बहुत, ये आप सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर, I mean we are definitely going to create a frame like this. This is so classic. Okay, and I like this one. This frame is good. This frame is really good. I mean जो उसकी बात कर रहे थे हम लोग colors की, this frame is really good. So just start finding the right references, start finding something which absolutely catches your eye, and amazing, amazing. Look at this. Amazing. I'm definitely going to add this in the board. So साथ से ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फ़ोन की ही बात समझें, आई मीन फ़ोन के लिए ही सर्चेस करें, you have to search for style frames as well, style frames and typography as well. For example, this typography, I really like this. I mean, it is not catching a lot of attention. The thing which I like about it is that it's not catching a lot of attention, the text itself, and it is readable, and the smartphone is in focus as well. So it's आपकी आँख फ़ोन की तरफ जाती है, फिर वापस इधर आ जाती है, फिर फ़ोन की तरफ जाती है, फिर वापस इधर आ जाती है, और कहीं नहीं जा पा रही है. Okay, so this frame is really nice in terms of that. So because I really like dark environments and working on projects जिसमें light थोड़ी सी dark हो, so I'm definitely going to make this a dark video. Dark not in terms of horrifying, in terms of colors and themes like that. So देखते हैं कॉपी हो सकता है नहीं. Okay, I haven't decided कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, but yeah, surely जो कि फूल लगे वो देख लेंगे, but easy to model भी हो, because I don't want to create something which you guys are unable to follow along, because I know most of you are beginners and starting things out, but I don't want to bore you guys out by creating a tutorial जिसमें कोई मज़ा ही नहीं आए और एंड में आउटपुट भी बड़ा अजीब सा आ रहा हो. So it's not a technical class, it's more of कि आपको confidence मिल जाए after creating the whole thing by yourself. You just get enough confidence to start building things up, and later on you will obviously improve, inshallah. Yeah, this frame. See, the typography is also important. So this I won't lie about it, this does require a lot of patience. So just एक अच्छे से अपने playlist on कर लें और बस start finding the right references for the project. Okay, so now let's also think about कि भाई script के अंदर से हमने क्या क्या cover कर लिया, and again this is not complete yet. I'm just going to check things out कि भाई हमने कुछ पसंद किया और मैं इसका title change कर रहा हूँ, mobile ad. Okay, so हमारे पास design, camera, screen size, processor. Okay, colors, हम colors की भी बात कर रहे हैं अब. Okay, so colors भी add कर लेते हैं. So again इसमें से हम add subtract कर रहे होंगे depending on the situation in the execution part, क्योंकि
बहुत सारे फ्रेम्स अगर रखेंगे तो वो बस बनाते ही रहेंगे और फिर वो कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा. एनीवे, सो आपने डिज़ाइन वाला पार्ट कवर कर लिया. आई डोंट थिंक सो. कैमरा इज़ कवर्ड, यस. स्क्रीन साइज इज़ कवर्ड, यस. एंड processor is covered. Let me see. Yeah, I think processor में हम ये वाला part use. Okay, so processor is covered. Screen is covered. Okay, so it's not really important कि आप एक ही reference निकालें एक part के लिए. For example, मुझे screen size के लिए कोई और composition अच्छी लगेगी, I will definitely go for it. Okay. So this can be, this can be for colors. Okay, so this can be for, ये एक close up हो सकता है और उसके फौरन बाद ये आ जाए. And then we say कि भाई it's a leap year. No, we won't say this. We will say कि we will just use a random number कि इतना megapixel camera है, and we will just write it down here, and we will just show a cool image here of the phone. Okay, so first we will show this ताकि ये close up एक आ जाए, and then we will show this frame so that it looks amazing afterwards. एक reveal effect भी आ जाएगा. Okay, so this is for colors. Okay, this is for processor. Again, we will find multiple references if possible. This is for reflections and all. ये screen size के लिए हो गया, and ये colors के लिए हो गया. Okay, ये भी है colors के लिए. So maybe we can just combine these up, or maybe we can just use one of them. ठीक है, देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा flow में सही आ रहा है. Okay, so again, this is for reflection. Use it here. And now we need to have some more. Okay, design के लिए हमें चाहिए, 4G connection के लिए चाहिए. Okay, so connection के लिए maybe we will need a frame which has user interface in it, और उसके ऊपर 5G connection वगैरह आ रहा हो लिखा हुआ. So maybe a close up of a screen, right? So smartphone 5G. Let's search. ओके, सो इसी तरह से अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बस ढूंढते रहना है, और वो फिर इवेंचुअली आपको कोई ना कोई आइडिया क्लिक कर जाएगा, एंड देन यू कैन यूज़ दैट. Connection. ठीक है, so you can also type different keywords जिससे हो सकता है कुछ बेहतर मिल जाए. Okay, and one more thing, you don't really have to show every single thing in by phone. You can also type things out. For example, let's just say if we go to the collection we have just said, we have just saved. Let's as you can see कि यहाँ पर phone है और फिर उसके बाद text है, and then you will see afterwards कि इसके बाद text से भी बात हो रही है सिर्फ. You don't have to show the whole whole visual every single time. हर बार आप अगर एक ही तरह की चीज़ दिखाते रहेंगे, चाहे वो इतनी आपने cool बनाई हुई हो, it will start to look boring, or maybe it will not be that amazing if you start to create some contrast in it. For example, अगर हमने 2-4 वीडियो ये दिखा दिए इस तरह के फ्रेम्स जिसके अंदर विजुअली आपने फ़ोन और क्लोजअप्स वगैरह अच्छे से दिखा दिए, then you need a contrast on your frame, right? So for example, if you have shown this frame, okay, if you have shown this frame and this frame, okay, and maybe this frame, let's just say, तो उसके बाद आपने काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रीन के ऊपर भर के दिखा दी हैं. Okay, so these are taking a lot of positive space. This is just the negative space. This is just the only negative space. Okay,
सो आपने क्या करना है, आपने उसको ब्रेक भी करना है साथ साथ, सो यू कैन इंसर्ट सम फ्रेम्स जिनके अंदर सिर्फ टेक्स्ट हो या कम विजुअल हो, जो कि आपके टेक्स्ट को और रीड करवा सके और विजुअली वीडियो को भी और अपीलिंग बना सके. कॉन्ट्रास्ट इन फ्रेम्स, कॉन्ट्रास्ट इन कलर्स. ओके, सो लेट्स जस्ट ऐड दिस pro. Maybe we can zoom into something and add 4G here. Okay. So क्योंकि मैं यहाँ पर आइडियाज स्टोर करता जा रहा हूँ, when I will start executing stuff, I will remember these things because I am finalizing them as well साथ साथ by storing them into the pure reference. Okay. Now let's see what is it. This looks nice. कभी कभार चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप उसको exactly करें भी. If you think this goes with the theme and you can somehow put it somewhere in the process, and so just grab a screenshot of it, and later on you can decide कि इसको film में रखना है या नहीं रखना है. But instead of losing it, just save it. See? Maybe I can just create a circle and type through in it. Maybe that will look amazing. Maybe not. So, how about that? Okay. So अब हमारे डिज़ाइन रहता है, कैमरा हो गया, स्क्रीन 5G, प्रोसेसर हो गया, कलर्स हो गए, डिज़ाइन रहता है. सही है. सो I think in the design I would like to show the simplicity of it and how slim it is. Okay, because I'm using a smartphone. It is really heavy. It is really heavy to use. Okay, so I would suggest, I would, for myself, I would buy a slim phone. Maybe not. It's just a personal preference. But maybe showing how slim a phone is, and how good it looks, in when it is zoomed out and presented maybe like this. So at the end of the day, it's all it's all depend on your taste, personal taste, because जब आप कोई फ्रेम बना लेंगे, people जो लोग हैं वो बाद में देखेंगे, right? So you have to find the right essence जो कि लोग enjoy करें और जो कि visually appealing हो. This is a really nice frame. I mean, look at the lighting. यहाँ पर rim light, यहाँ से shadow, यहाँ पर highlight. Okay. If you want to create great lighting, play with the shadows instead of the lights. Okay. क्योंकि ये भी डिज़ाइन का पार्ट है. People usually do flat things out. मतलब हर जगह लाइट डाल देते हैं और फिर it looks flat. It doesn't have depth to it. This also looks nice. I think ये low res है तो समझ नहीं आ रहा है अभी, आगे देख. Anyway, Behance पे भी कुछ सर्च कर लेते हैं. Okay. Mod phone ideas. Let's see. तो लोगों ने बहुत खूबसूरत काम भी किए हुए हैं. ऐसा नहीं है कि हर प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा. ड्रिबल भी, बाय द वे, इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू फाइंड सम गुड रेफरेंसेस. सी, और फिर अब एक ये भी काम करना है कि हम एंड किस तरह कर रहे होंगे और स्टार्ट किस तरह कर रहे होंगे. बिकॉज इफ द स्टार्ट एंड एंड फ्रेम ऑफ योर वीडियो इज ग्रेट, then it is more likely to be viewed more by the audience. ये खूबसूरत प्रीमियम पर है ये.
अच्छा, कभी कभार होता है कि नॉर्मली व्हेन आई ट्राई टू डाउनलोड थिंग्स अप, तो मैं सिर्फ पिंटरेस्ट पर जमा कर लेता हूँ, एंड व्हेन आई वर्क ऑन द प्री विजुअल, फिर मैं वहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ चीज़ें। सो फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी बिहार से देखा है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ दैट, क्योंकि पिंटरेस्ट पे काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी आपको मिल जाती हैं, तो आई विल जस्ट सर्च फॉर इट, मे बी टाइप दिस होल थिंग आउट, लेट्स सी। हो सकता है बहुत चांसेस है कि ये हो यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ये है। अगर विम्यू का लिंक मिल जाए तो वो और अच्छा हो जाएगा। ये रहा, ठीक। नाउ आई विल जस्ट सेव इट इन द मोबाइल ऐड। उससे होगा ये कि जब मैं एंड में प्रीविजुअल पर काम करूँगा तो मुझे अलग अलग वेबसाइट पर नहीं जाना होगा। मैं सिर्फ अपना ये बोर्ड खोलूँगा एंड आई विल जस्ट स्टार्ट डाउनलोडिंग द वीडियोस एज वेल एज द विजुअल्स। However, I have copied out all the visuals which are necessary for the video. बट ये कि जब प्रीविजुअल पर हमें क्या करना होगा, हमें टाइमिंग और स्पेसिंग और एनिमेशन देखनी होगी। सो दिस इज़ वेरी एसेंशियल टू टू हैव समथिंग मूविंग in the pre-visual, so that you can identify the right timing and all. Plus I would like to add a few more things. For example, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि abstract होती हैं। For example, हम ये भी कर सकते हैं कि एक कपड़े, एक फ़ोन है हमारे पास, और कपड़ा है और उसके ऊपर से होता हुआ गुजर जाए, सो थोड़ी सी इंटरेक्शन हो जाएगी। सो दैट मे बी थिंग्स लाइक दैट, जो कि ज़रा सा एक आपके ओवरऑल कंटेंट के अंदर थोड़ी सी और जान डाल रहे। सो दिस इज समथिंग विच यू विल सी इन अ लॉट ऑफ एड्स, इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि कुछ चीज़ें बस रैंडमली हो जाती हैं और वो देखने में अपीलिंग लगती हैं, राइट? सो देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट, बट if you want, you can add the message to it as well, which maybe we can try it out. Maybe in the starting frame, we can start by एक कपड़ा हो जो कि उस फोन पर से उतर रहा हो, and then we will just reveal the design. Maybe this is a good idea, right? Okay, so now we will have to find some references like that, because before starting anything, you should find the right references, because that is the whole point of creating the mood board, right? I know this part can get a bit boring, because you are just watching me to search all these things, but believe me, this is the part which defines the whole, which defines the future of your video. Okay, so road, smartphone, क्योंकि Pinterest के कीवर्ड इतने पावरफुल नहीं है जैसे गूगल का सर्च इंजन है। सो ट्राई टू be very simple when you're picking the words to search on Pinterest. Go smartphone 3D. Let's see. See, ये भी अच्छा, ये भी बुरा नहीं है, but we want something जो क्या revealing हो। Yeah, maybe something like that जो कि बस फ़ोन के ऊपर से होता हुआ गुजर जाए, and then we will reveal the phone. Okay, I will just add it into the board, but let's find more references, क्योंकि this is the right direction, but this is not what we really want. We want something, which can highlight the phone. इसमें सारा focus कपड़ों पर है. We don't want that. We want a composition uh, जिसमें phone पर focal point हो. Watch.
Hawaii B30 series. Let's see what it has. हो सकता है कुछ मिल जाए in videos. Yeah, now we are finding the right. We are in the right search. Yeah. This looks nice. This looks nice. We can just, start इस तरह से कर सकते हैं and then we will just, reveal the whole thing. Yeah, like that. Very nice. Very nice. Yeah, let's do that. Let's do that. Very nice. You once you start appreciating these frames, you are on the right track. I think you give. I think appreciation goes a long way. Lovely. खूबसूरत frame. बहुत आला. See, if you're surrounded by these kind of frames and these kind of styles, you will eventually end up creating something like that, something similar to this, right? So that's growth. That's this will also build up some confidence in you. At least in the beginning stages. Okay, so once again, we will not be creating the whole thing like that. Okay, we will be just getting the essence of it and try to add this into our story. Okay, so हमारे पास camera design. Okay, slim. That's what I talked to you guys about. Slim के लिए तो बहुत एक simple सी composition ये ऐसे भी बन सकती है. For example, let me just grab a screenshot of anything. Okay, so slim के लिए ये भी हो सकता है कि भाई आपने अपना ये frame बनाया हुआ है, ठीक है, और आपने बीच पे बस slim दिखाने के लिए अपना अपना फ़ोन ऐसे रख दिया. That is it. उसकी lighting खूबसूरत कर दी and you will and after that you will just rotate it to show that to reveal the whole design. But यहाँ पर आप लिख सकते हैं slim. See, कुछ आइडियाज़ आपके जहन में ऐसे भी पॉपअप होते रहते हैं. स्लिम डिज़ाइन लिख दिया है यहाँ पर और आप नीचे अब मैं माउस से लिख रहा हूँ तो इसमें अजीब राइटिंग हो रही है. स्लिम डिज़ाइन यहाँ पर इस तरह से आ जाए. ओके, तो बट उसके लिए लाइटिंग ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है. उसमें लाइटिंग इस तरह की हो सकती है और ये आई थिंक हम ऑलरेडी ऐड भी कर चुके हैं, बट just for the safe side, let's add it as we had. खूबसूरत. You guys will you will see that in a lot of videos I will be saying these words. खूबसूरत बहुत आला. I mean, it is just it just come out naturally. Okay, I think we are good to go for now, and I think I have told you guys how to how to do this face, how to work on this face, and I will go around in different. ज़रूरी नहीं है कि आप हर website से एक frame लें. It's not important. What is important is that if you're not finding the right reference in one website, I have shown you a couple of websites on which you can find different things out. Okay,
For example, out of title पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, you have different resources. Okay, that is the reason why I have shown all these websites, so that you guys can find different different artists and their styles and their style frames. Okay. By the way, one thing which I would like to mention is that in this method, I haven't included the style frames part, which I will, which I will add. Style frames for a part. Let's add that after modeling. Okay. After modeling. Okay. So once the modeling part is done, we will work on style frames. So what are style frames? जिस तरह से concept art होता है before executing the animation and before before working on the lighting and shading and rendering stuff, style frames बनते हैं. Okay, I will explain that in a different video, but for the time being, let's just adjust. अच्छा नहीं लगा ये और था. Anyway, so let's meet you guys in the next video, and we will work on the pre-visual. Thank you.